Hello friends, I am Aditi and welcome back to my channel Aditi GS Center. And let's begin with our lesson, that is Importance of Oceans. This chapter is of 6th standard and its subject is the geography. Importance of ocean means Mahasagar ka Mahatva. So this chapter consists of the two parts and already we have completed our first one part. And now we shall begin with our second one part. So the second one part consists of the 4 points. The 5th point name is Oceans and Climate, 6th point name is Oceans and Resources, 7th point name is Oceanic Transport and 8th point name is Issues related to the ocean. So first of all we will see here the diagram. In this diagram we will see the name of the ocean and its area in the square kilometer. So here first the name of the ocean is Pacific Ocean and its area in the square kilometer is 16 crore 62 lakh 40,977. Next one name of the ocean is Atlantic Ocean and its area in square kilometer is 8 crore 65 lakh 57,402. Next one name of the ocean is the Indian Ocean and its area in the square kilometer is 7 crore 34 lakh 26,163. The next one name of the ocean is the Southern Ocean and its area in the square kilometer is 2 crore 3 lakh 27,000. The next one name of the ocean is Arctic Ocean and its area in the square kilometer is 1 crore 32 lakh 24,479. So this is the name of the ocean. These are the 5 name of the ocean, that are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean. And here we have seen about the area in the square kilometer. तो इधर ये डायग्राम में तो इधर ये ओशन यानी महासागर के नाम है, जिन मतलब महासागर का नाम है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न, आर्कटिक, और अभी हमने इसका एरिया इन द स्क्वायर किलोमीटर देखा. So now we will see about the 5th one point, that is oceans and climate यानी महासागर और जलवायु. So here we will see the diagram. In this diagram we will see about the place and which place is located in which country, and we will also see about that place maximum temperature and also its minimum temperature and also its range of temperature. So let's begin with our first one place, that is the place is the Beijing, and this Beijing place is located in the country of China and its maximum temperature of the place Beijing is 18.4 degrees Celsius and minimum temperature is 8.4 degrees Celsius and its range of temperature is 10 degrees Celsius. तो ये जो जगह है प्लेस बीजिंग, ये चाइना देश में स्थित है और बीजिंग का जो ज़्यादा से ज़्यादा तापमान है ये 18.4 डिग्री सेल्सियस है और उसका मिनिमम टेम्परेचर यानी कम से कम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस है और उसका रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है, यानी रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी तापमान की सीमा, तो उसके तापमान की सीमा 10 डिग्री सेल्सियस है. Here the place is the Istanbul and the Istanbul place is located in the country of the Turkey and its maximum temperature is 18.0 degree Celsius and minimum temperature is 10.0 degree Celsius and so its range of temperature will be 8 degree Celsius. तो ये जगह कौन सी है? इस्तांबुल है और इस्तांबुल जो जगह है ये देश टर्की में शामिल है, स्थित है. तो इस्तांबुल की ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस है और उसकी कम से कम तापमान 10.0 डिग्री सेल्सियस. सो इट्स मिनिमम टेम्परेचर यानी कम से कम तापमान 10.0 डिग्री सेल्सियस है एंड इट्स रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी तापमान की सीमा 8 डिग्री सेल्सियस है. नेक्स्ट वन थर्ड वन इज द प्लेस इज द मैड्रिड एंड दिस प्लेस मैड्रिड इज लोकेटेड इन द कंट्री ऑफ स्पेन and the Madrid maximum temperature is 19.0 degrees Celsius and its minimum temperature is 9.9 degrees Celsius. So here the range of the temperature will be 10 degrees Celsius.
So here the place is third one, the Madrid, and this Madrid place is located in the country of Spain. So its maximum temperature is 19.0 degrees Celsius and its minimum temperature is 9.0 degrees Celsius. So here the range of the temperature will be 10 degrees Celsius. Next one, fourth one, the name of the place is New York, and this New York place is situated in the country of United States, and this New York place, the maximum temperature is 16.3 degrees Celsius and its minimum temperature is 8.3 degrees Celsius. So here the range of the temperature will be 8 degrees Celsius. So now here the name of the place is the Denver, and this Denver place is situated in the country of United States, and its maximum temperature is 16.2 degrees Celsius and its minimum temperature is 2.2 degrees Celsius, and its range of temperature will be 14 degrees Celsius. Next one, name of the place is the Kabul, and this place is situated in the country of Afghanistan. So the Kabul's maximum temperature is 14.0 degrees Celsius and its minimum temperature is 5.2 degrees Celsius. So here the range of the temperature will be 9.5 degrees Celsius. The next one, name of the place is the Baghdad, and here this Baghdad place is situated in the country of Iraq, and its maximum temperature is 30.4 degrees Celsius and its minimum temperature is 14.7 degrees Celsius. So here the range of the temperature is 15.7 degrees Celsius. So this is the full diagram we have seen about the place and which place are situated in which country, and we have also seen about its maximum and minimum temperature, as well as we have also seen about its range of temperature. So here our fifth one point, that is oceans and climate, it is get completed. As the regions close to the sea have an equable climate, the density of the population is high in these areas, and the coastal areas have always attracted the man due to its climates, its abundance of the food and the various products obtained by the sea. तो जो क्षेत्र होते हैं जो कि सी यानी समुद्र से नज़दीक होते हैं, तो वो उधर का जो क्लाइमेट होता है, उधर का जो जलवायु होता है, ये सामान्य होता है, और जो आबादी का घनत्व होता है ये हमको इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। और जो मतलब कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, ये हमेशा इंसानों को प्रभावित करते हैं अपनी ओर। कैसे? अपने जलवायु के कारण, कई सारे प्रकार के खाने, विविधता प्रकार के खाने के कारण, और कई सारे प्रकार के हमको वस्तुएं पदार्थ पाए जाते हैं समुद्र से, उसके कारण जो तटीय क्षेत्र होता है ये हमेशा इंसानों को प्रभावित करता है अपनी ओर, etc. In future it will be possible to generate the electricity with the help of the oceanic waves and tides. तो फ्यूचर में यानी भविष्य में ऐसा भी संभव हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, हम उसे ओशनिक वेव्स यानी महासागर की लहरों से या टाइड्स यानी ज्वार की मदद से निर्माण कर सकते हैं। It is possible to convert the saline ocean water into potable drinking water, and this will reduce the scarcity of the drinking water to some extent. And the drinking water in the city of the Dubai in the United Arab Emirates, the water is made available through this method. तो ऐसा भी संभव हो सकता है कि जो खारा महासागर का पानी है हम उसे स्वच्छ पीने के पानी में बदल सकते हैं, और इससे क्या होगा कि जो पानी पीने की कमतरता है ये कुछ हद तक कम हो जाएगी। और जो पीने का पानी है दुबई के शहर में, और दुबई का शहर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में स्थित है, तो इधर जो पानी होता है ये हमको इसी तरीके द्वारा पाया जाता है। एंड इन द स्वैम्पी एरियाज ऑफ द सी कोस्ट and also in the areas of the estuaries, the soil are saline and the climate humid. In such areas, the mangrove forest means the mangrove are the shrubs or the small trees which grows in the coastal saline and the brackish water. तो मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी मैंग्रोव जो होता है ये एक झाड़ी होती है या छोटा पेड़ होता है जो कि तटीय क्षेत्र में जो खारी जगह होती है या खारा पानी होता है उधर ये उगता है। So, in such areas, the mangrove forest with tiwari and sundari grow well.
and the wood of this mangrove trees is light and oily and it lasts longer. तो जो नदी किनारे जो दलदल के क्षेत्र होते हैं और नदमुख के जो क्षेत्र होते हैं, तो इस क्षेत्रों में जो मिट्टी होती है वो सलाइन यानी खारी होती है और जो क्लाइमेट यानी जलवायु होता है ये आर्द्र होता है। और ऐसे क्षेत्रों में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी मैंग्रोव वन जो होता है तिवारी और संडरी के साथ ये अच्छे से उगता है। और जो पेड़ होते हैं मैंग्रोव के, उनकी जो लकड़ियाँ होती है ये बहुत ही हल्की और तेलीय होती है और वो बहुत ही ज़्यादा समय तक टिकती भी है। एंड इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल एंड ऑल्सो फॉर द शिप बिल्डिंग, तो उसे ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है उसका, और जहाज भवन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। And the mangrove forest protect the coastal areas from huge waves, and the mangrove forest also protect the biodiversity in the coastal areas. And if these forests are located near the coastal towns, they are called as the lungs of these towns. तो ये जो मैंग्रोव वन जो होता है, फॉरेस्ट जो होता है, ये तटीय क्षेत्रों को बड़ी बड़ी लहरों से बचाता है। और मैंग्रोव वन जो होता है ये तटीय क्षेत्र में जो जैविक वैविध्य होता है, बायोडाइवर्सिटी जो होता है, उसे भी बचाता है। और अगर ये जो वन होता है, मैंग्रोव वन जो होता है, ये तटीय शहरों के आसपास अगर स्थित होता है तो उन शहरों का ये क्या होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट लंग्स होता है यानी फेफड़े होते हैं। So now we will see about our sixth one point, that is oceans and resources, यानी समुद्र यानी महासागर और संसाधन। We have seen earlier that we obtain the salt, fish, shells and various other products from the oceans. And beside this, we get many minerals such as the iron, lead, cobalt, sodium, manganese, chromium, zinc, etc. from the ocean floor. And we also get natural gas and mineral oil. तो हमने देखा था कि हमको कई सारे प्रकार के सॉल्ट मतलब हमको नमक पाए जाते हैं, मछलियाँ पाई जाती है और गोले पाए जाते हैं, और दूसरे प्रकार के पदार्थ वस्तुएं हमको महासागर से पाए जाते हैं। और इसके अलावा हमको कई सारे प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, लीड, कोबाल्ट, सोडियम, मैंगनीज, क्रोमियम, जिंक एक्सेट्रा। ये सब हमको जो मतलब महासागर की सतह होती है निचली वाली, इधर से हमको पाया जाता है। और हमको नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस और मिनरल ऑयल यानी मिनरल तेल भी पाया जाता है। एंड वी गेट द प्रीशियस आइटम्स लाइक द पर्ल्स, कोरल्स and ornamental items like the shells and medicinal plant from the sea. तो हमको कई सारे प्रकार के मोती भी बेटे मतलब कई सारे प्रकार के हमको कीमती सामान भी मिलते हैं, जैसे कि मोती, कोरल्स और सजावटी सामान जैसे कि शेल्स होता है यानी गोले होते हैं, और कई सारे मेडिसिनल प्लांट यानी औषधीय पौधे भी हमको समुद्र से पाए जाते हैं। So our sixth one point, that is oceans and resources, it is get completed. So now we will see about our seventh one point, that is oceanic transport यानी समुद्र द्वारा परिवहन। So oceans have provided us the most important option for the transportation, and large scale transportation of goods is carried out with the help of ships, boats and travelers. International trade is carried out by using the water routes. तो जो ओशन होते हैं, जो महासागर होते हैं, उन्होंने हमको एक बहुत ही अच्छा विकल्प दिया है परिवहन के लिए, और बहुत ही ज़्यादा प्रमाण पर जो माल का जो परिवहन होता है उसे शिप यानी जहाज़, बोट या ट्रैवलर्स की मदद से किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड जो व्यापार होता है, परिवहन जो होता है, उसे पानी के रास्तों द्वारा ही किया जाता है। एंड द कंट्रीज लाइक स्पेन, जापान, नॉर्वे हैव अ गुड कोस्ट लाइन, एंड ड्यू टू द गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय द ओशन रूट्स दिस कंट्रीज हैव गेन्ड इम्पोर्टेंस। तो देश जैसे कि स्पेन, नॉर्वे, जापान, इन देशों के पास एक अच्छा समुद्र तट है, और जो माल होता है जो कि मतलब पानी के रास्तों द्वारा जाता है, तो इन देशों ने बहुत ही अच्छा महत्व प्राप्त कर लिया है। Ocean currents are quite important in the water transport. As far as possible, the water transport is carried out along the ocean currents. They accelerate the speed of the ship and also save the fuel to the considerable extent. तो जो ओशन करंट्स होता है यानी जो महासागर की धाराएं होती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है पानी द्वारा परिवहन के लिए, और जितना ज़्यादा संभव हो सके जो पानी द्वारा परिवहन होता है उसे महासागर की धाराओं के साथ किया जाता है।
और वो जो शिप होती है, जो जहाज़ होती है, उसके स्पीड को, उसके रफ्तार को तेज़ी से बना डालती है, तेज़ी हो जाती है उसके रफ्तार में, और उसका जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, वो कुछ हद तक बच भी जाता है. And water transport is conducted on the much higher scale as compared to the other modes of transportation. And to transport the bulky materials such as the coal, crude oil, raw materials, metallic minerals and the food grains etc., the water is given as the preference. तो वाटर ट्रांसपोर्ट यानी पानी द्वारा परिवहन होना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रमाण पर किया जाता है. जो दूसरे तरीके होते हैं परिवहन के, उससे ज़्यादा पानी द्वारा परिवहन करना, इसे बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है. ये बहुत ही ज़्यादा प्रमाण पर होता है. और जो मतलब बल्कि मटेरियल्स यानी जो भारी भरकम वस्तु है, सामग्री का ट्रांसपोर्टेशन परिवहन करने के लिए, जैसे कि कोल यानी कोयला, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, और मेटालिक मिनरल्स यानी धातु के मिनरल्स, और फूड ग्रेन्स यानी अनाज, और रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे सामग्री. तो इन सभी वस्तुओं का जो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, परिवहन करने के लिए जो पानी होता है, उसे पसंद किया जाता है, प्राथमिकता किया जाता है, और मतलब महत्व भी दिया जाता है. So here our seventh one point, that is oceanic transport, it is also get completed. Now we will see about our 8th point, that is issues related to the oceans, यानी महासागर से संबंधित मामले. About 70.8% About 70.8% of the surface of the earth is occupied by the water. In order to fulfill its requirement, man undertakes many activities, and this leads to the formation of the huge amount of the different types of the waste, and this waste causes the pollution, and the pollution of the oceanic water is the major and the serious issue that has been developed in the recent times. तो 70.8% जो पृथ्वी पर सतह होती है, ये हमको पानी में ही पाई जाती है. और जो मैन होता है, जो इंसान होता है, उनकी ज़रूरतें को पूरी करने के लिए वो कई सारे काम कार्य करते हैं. तो इसके द्वारा कई सारे प्रकार के कचरे का बहुत ही ज़्यादा प्रमाण पर अलग अलग प्रकार के कचरों का भी निर्माण होता है, और इस कचरों के द्वारा प्रदूषण भी होता है. और जो महासागर के पानी का जो प्रदूषण होता है, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही गंभीर मामला है, जो कि अभी के वक्त में विकसित हुआ है. सो नाउ वी विल सी अबाउट द रीजंस फॉर द पॉल्यूशन ऑफ द ओशनिक वाटर. तो अभी हम कारण देखेंगे कि जो महासागर का पानी है, उसका प्रदूषण कैसा होता है. सो फर्स्ट वन इज द ऑयल स्पिल्स, यानी तेल का फैल जाना. सेकेंड वन इज रिलीजिंग द वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द कोस्टल सिटीज इनटू द सी. तो जो वेस्ट होता है यानी जो कचरा होता है, जो कि तटीय शहरों में निर्माण होता है, तो बाजू में ही सी होता है, समुद्र होता है, तो उसमें फेंक डालने से जो महासागर का पानी है, समुद्र का पानी है, उसका प्रदूषण होता है. देन थर्ड वन इज मटेरियल्स थ्रोन आउट फ्रॉम द शिप, यानी जहाज़ों द्वारा मटेरियल्स यानी सामग्री फेंक डालने से. देन फोर्थ वन इज एक्सप्लॉयटेटिव फिशिंग, यानी जो मछलियों का शोषण करने के द्वारा. देन द फिफ्थ वन इज कटिंग ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द कोस्टल एरियाज, यानी तटीय क्षेत्रों में जो मैंग्रोव वन है, उसे काटने के द्वारा. देन सिक्स्थ वन इज डिजास्टर कॉज्ड बाय द वाटर माइंस, यानी पानी के खानों द्वारा आपदा होना. देन सेवेंथ वन इज सीवेज रिलीज्ड बाय द इंडस्ट्रीज एंड सिटीज, यानी शहरों और इंडस्ट्रीज द्वारा सीवेज यानी कचरा मतलब फेंक डालना. Then the eighth one is excavations carried out in the sea, यानी समुद्र में खुदाई करने से. All these things we have seen, this lead to the large scale pollution of the oceanic water. तो ये सभी जो हमने देखा, तो इससे क्या होता है कि जो महासागर का पानी है, उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रमाण पर प्रदूषण हो जाता है. And some coastal areas are proving to be the death traps for the aquatic animals. As a result, the aquatic animals are under the threat of being extinct, like such as for example the blue whale and some types of the sea turtles and dolphins etc. तो कौन से जो तटीय क्षेत्र होते हैं, ये मौत के जाल साबित हो रहे हैं जलीय जीवन के लिए. और इसी कारण जो जलीय जीवन है, जलीय जीव जो होते हैं, वो मतलब विलुप्त होने के खतरे में है. जैसे कि उदाहरण के लिए ब्लू व्हेल हो सकती है, या कुछ अलग अलग प्रकार के समुद्री कछुए या डॉल्फिन्स एक्सेट्रा. A larger proportion, so our 8th point, that is issues related to the oceans, it is get completed.
A larger proportion of the surface of the earth is occupied by the water, and most of the water is the salty, and this in the living world in this salty water is suffering from the pollution caused by the man, so we must avoid this. तो बहुत ही ज़्यादा प्रमाण पर जो सतह होती है पृथ्वी पर ये हमको पानी में ही पाई जाती है, और उसमें से बहुत ज़्यादा पानी सॉल्टी भी होता है, खारा भी होता है। और ये जो खारे पानी में जो जीवित दुनिया होती है ये कई सारे खतरों से वो गुजर रही है, जो कि हम इंसानों द्वारा, मतलब उधर प्रदूषण होता है, जो कि प्रदूषण हम इंसानों द्वारा होता है, तो हमको इस प्रदूषण को टालते रहना चाहिए। The proportion of the water is being greater than that of the land. The earth is known as the water planet, and water in any form is boon for the living world. And of all the planets known to the man, the earth is only the one which has the living world. तो बहुत ही ज़्यादा प्रमाण पर हमारे पृथ्वी पर क्या मौजूद है? पानी मौजूद है ज़मीन से ज़्यादा, तो इसीलिए पृथ्वी को वाटर प्लैनेट यानी पानी की दुनिया भी, पानी का दुनिया भी कहा जाता है। और पानी किसी भी रूप में ये एक मतलब क्या है? बून है, यानी एक वरदान है जीवित दुनिया के लिए। और सभी जो ग्रह होते हैं जो हम इंसानों को पता है, तो उसमें से पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है जिस पर जीवित दुनिया मौजूद है। So this is our second part of the chapter importance of ocean, which is fully get completed. This is our full chapter, it is get completed. First of all, we have seen about the diagram. In that diagram we have seen about the various types of the oceans, and we have also seen about their area in the square kilometer. Then we have seen about the second one diagram. We have seen about the various types of the places such as Beijing, Istanbul, Madrid, New York, Denver, Kabul and Baghdad. And we have also seen that these places are located in which of the country. We have also seen about its maximum and minimum temperature as well as its range of the temperature. Then we have seen about the sixth one point, that is oceans and resources. In this we have seen that we obtain various such as the shells and fishes and salt etc. from the oceans, and we also obtain the natural gas and mineral oil. We have also seen that we obtain various types of the minerals as well. Then we have seen about our seventh one point, that is the oceanic transport. Before that we have learned about in future it will be possible to generate the electricity with the help of oceanic waves and tides, and we have seen that in the swampy areas of the sea coast and also in the areas of the estuaries the soil are saline and the climate humid. In such areas the mangrove forest with tiwari and sundari grow well, and this mangrove forest protect the coastal areas from huge waves, and if this mangrove forest are situated near the coastal towns, they are called as the lungs of these towns. Then we have seen about the seventh one point, that is the oceanic transport. In it we have seen about the oceans have provided us the most important option for transportation, and large scale transportation of the goods is carried out with the help of ships, boat and travelers and the countries such as the Spain, Norway, Japan have a good coastline etc. Then we have seen in it also to transport the bulky materials such as the coal, crude oil, raw materials, metallic minerals and food grains. The water transport is given as the preference. Then next one, 8.1 point, we have seen about issues related to the oceans. In it we have seen about 70.8% of the surface of the earth is occupied by the water, and in order to fulfill his requirements the man undertakes many activities, and this leads to the formation of the various types of the waste, and this waste materials causes the pollution, and the pollution of the oceanic water is the major and the serious issue that has been developed in the recent times, and we have seen about the various reasons for the pollution of the oceanic waters. Then we have seen that some of the coastal areas are proving to be the death traps for the aquatic animals etc. And a larger proportion of the surface of the earth is occupied by the water, and most of the water is the salty, and the water in any form is the boon for the living world. So this was our the second part of the chapter importance of ocean, यानी महासागर का महत्व. जय हिंद.